तो हेलो टैलेंट गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो, क्या हाल म्यूजिक एंजॉय करते हैं स्टार्टिंग का गेम का। इस स्टोरी को शुरू करेंगे गानी और शाओ की स्टोरी को। शुरू किया, दोनों अडेप्ट आए। सही लिखा तुमने टैलेंट, बिल्कुल सही लिखा। रीडिंग कमांड नॉट अलाउड इन जेंशिन इम्पैक्ट स्ट्रीम्स। सबसे पहले ओपी, नाइस, अच्छी बात है, तो पहले आ गए। म्यूजिक एंजॉइंग। मॉर्निंग म्यूजिक अलग होता है, आफ्टरनून इवनिंग अलग होता है, नाइट का म्यूजिक अलग होता है जेंशिन का। और कैसे हो चार्ड बॉय? चार्ड ही बोल रहे हो ना? चार्ड बॉय क्या है ये? ओपी म्यूजिक। हाँ हेलो सर, लॉर्ड सत्यन, वेलकम टू द स्ट्रीम। यार कल की स्ट्रीम में यार भजन चल रहे थे मेरे स्ट्रीट पे, तो मेरे यहाँ की स्ट्रीट पे तो मैं चला नहीं पाया था, माइक ऑन नहीं कर पाया था, तो उसके लिए सॉरी भाई। आपका नोटिफिकेशन लेट से आता है क्योंकि उस टाइम जो मैंने स्ट्रीम स्टार्ट नहीं की होती है और तुम ज्वाइन करके बैठे हुए होते पहले से ही। लेट नहीं आता, जब स्ट्रीम स्टार्ट होती है यहाँ से मैं टर्निप से स्ट्रीम ऑन करता हूँ तभी आती है नोटिफिकेशन। डोंट यू रीडिंग कमांड सीन दिया जो शुरू करें। और गानियों की और शाओ की स्टोरी को निपटाएंगे, ख़त्म करेंगे, स्टोरी जानेंगे अच्छे से। आओ, क्या हुआ साइलेंट है? आओ। अरे हाँ लॉर्ड सतन ब्रो, तुम्हें मुझे वो बताने हैं ना, कमांड्स बताने कैसे ऐड करते हैं वो सब। मैं तुम्हें एक टाइम बता दूंगा, तो उस टाइम पे तुम्हें सारा करके दिखाऊंगा कि कैसे कमांड ऐड करनी है, कैसे नहीं करनी, सब बताऊंगा। मुझे याद आ गया। हेलो अंशिका, वेलकम टू द स्ट्रीम। वेलकम करो मेरा, कर दिया अपनी छोटी बहन का वेलकम। नहीं करोगे अंकित? अच्छा, वेलकम भी करना होता है क्या अंशिका तुम्हारा? अनिकेत भैया, आज मैंने और अंशिका ने डायमंड चूस लिया मतलब चूस लिया डायमंड सारे ले लिए, सारे डायमंड। कितने हैं? जॉर्ड नंबर 1 पे चल रहा है, रैकर नंबर 2 पे, नंबर 3 पे तो मेरे ही है। ठीक है, टैलेंटर गेमिंग 50,000 लेके बैठा है। हैप्पी नॉट अंशिका, ठीक है। आया का हस्बैंड 7 नंबर पे है। हाँ, हम लोगों को डायमंड्स मिले। कहाँ से मिले? अच्छा, तुम क्या माइनक्राफ्ट की बात कर रहे हो या मेरी स्ट्रीम की बात कर रहे हो? यहाँ भी तो डायमंड है। अच्छा, माइनक्राफ्ट में 12,000, ओ माय गॉड, इतने सारे। अबे हैप्पी झूठ मत बोल लो। हाँ, पहला काम का मिशन पूरे करना। माइनक्राफ्ट यार, मेरे पॉइंट आजकल क्यों लॉस हो रहे हैं? तुम्हारे ज़्यादा लॉस ही होते हैं। कोई नई बात नहीं है ब्रदर, कोई नई बात नहीं है। क्या नहीं बोलूँ झूठ? क्या नहीं बोलूँ झूठ मतलब समझ नहीं आया। अरे हाँ, कल का इवेंट जो हम कर रहे थे ना, वो पूरा नहीं हुआ था, मुझे याद है आज भी। बस ये 3 रह गए थे, 2 रह गए थे मतलब। और पता नहीं इनविटेशन वाला क्या सीन है, देखते हैं। व्हाट डू यू मीन नॉट गेम? 12,000 इन अनिकेत सिंह। हाँ 12,000, नाइस। लव मेरा प्यारा भाई टैलेंटर। ओके, करो अपने प्यारे भाई को लव करो, नाइस। करेंसी फिर से चेंज होगी वैसे नए सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ पे। हैप्पी लाफिंग अंशिका क्राइंग, कुछ भी है मुझे पहचान मत करो, निकले यहाँ से। अरे यार भग गया। No, my sword. नहीं होगा क्या? ये मारेगा मुझे।
कैसे बचेंगे? बच गए। क्या मिला है हमें? जो भी मिला है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी का ख़त्म करते हैं। आई ऑफ द सॉन्ग कराना है। ओके जल्दी करा के निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं। अरे वहाँ एक चेस्ट है यार, इस एरिया को मार्क करना पड़ेगा मुझे, बाद में चेस्ट का यूज़ करेंगे। चेस्ट लेंगे मतलब। वैसे मैं चेस्ट ढूंढता रहता हूँ, जल्दी मिलती नहीं मुझे। तो एक्ट निकलो भाई। कहाँ गया? कहाँ है ये? Illusion shattered. कैसे मारूं मैं इसे? There is no escape. There is no escape. Bye bye. Have a great time, brother. अरे यार थोड़ा सा रह गया वो। क्या कर रहा है? Rain outlines your fate. गया। चिंचू ने कमाल कर दिया। हेलो अंशिका 2, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैंने लेगिंग्स भी बना लिए। ओके यार मेरे पास बहुत सारे आयरन है। नाइस, अच्छी बात है। हाय यार आज मेरे को इन्फेक्शन लगा है। कल इन्फेक्शन हो गया तुम्हारे? मेरे स्कूल नोटिस आया है कि स्कूल नहीं खोल रहे। क्या पागल पगला गया है स्कूल? लॉल। अरे कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लग गए ना, इसलिए शायद हो सकता है हो गया। हाँ कौन मार रहा है मुझे? इन्हें बाद में देखते हैं। पहले जल्दी से गानियों की स्टोरी कुछ करने के लिए हमें कमीशन मिशन निपटाने हैं सारे। कैम्बलॉल कैम्बलॉल। हाँ चलो उधर है यार, ये तो ऊपर में है। जल्दी चलते हैं, निपटाते हैं। चलो हील भी हो गया। टैलेंट सेम यार, क्या हो गया? गॉड नो आई विल गैम्बल ऑल प्लीज विन। देखते नहीं, अभी तक आ जाता गैम्बल। कोविड की वजह से वापस स्कूल बंद। अरे यार बढ़ रहे हैं। अरे यार क्या हो गया? मैं उल्टा चला गया। इधर है, यहाँ पे लड़ना है हमें। वो यहाँ पे या स्पेशल हीलिंग। रेन कटर Shine down. निपटाओ इन्हें, निपटाते हैं। स्पेशल फीचर ये भी गए। अब इसकी बारी। Illusion shattered. मर जा जल्दी, मर जा जल्दी, मर जा जल्दी, मर जा। डैमेज हुआ? नहीं हुआ। तेरा स्मैश और तुम भी गए। बाय बाय, ग्रेट टाइम। अरे और भी हैं, इसे मारने में मजा आता है। हमारे तो चल रहे। कोई नहीं, मौज करो। अच्छा स्कूल चलते हैं। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। निपटा दिया हमने। और बताओ तुम सभी के क्या हाल चाल है? हेल्थ वगैरह किसकी अच्छी चल रही है, किसकी ख़राब चल रही है? क्योंकि मेरी तो ख़राब चल रही है। तुम लोगों का सुन के खुश हो जाऊंगा मैं। यहाँ क्या छुपा है? यहाँ क्या छुपा है? यहाँ मास्क जिंदा है तो। हेलो मिस्टर मास्क, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसको कॉन्ग्रेट्स कर रहे हो? थैंक यू गॉड।
लव यू वेरी मच। अच्छा तुम जीत गए, ओ माय गॉड तुम जीत गए साइलेंटर, लॉल। हेलो आयाकत बैंड, वेलकम टू द स्ट्रीम। वेट, इससे मैं मेन कैरेक्टर तो एनिमो यूज़र था ना। आपका जियो कैसे है मिस्टर मास्क? मैंने जियो कैरेक्टर ले लिया, मतलब कि हम रेजोनेट कर सकते हैं। देखो दिखाता हूँ, ये रहा, ये जियो का वो एनिमो का स्टैचू है, एनिमो का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ 7। देखो ये आएगा, अभी आएगा रेजोनेट विद एनिमो। ये देखो रेजोनेट विद एनिमो करेंगे तो मेरे पास एनिमो की पावर आ जाएगी। मैं सब दिखाता हूँ तुम्हें। सीन का मॉस्क चैट में आया करबन, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये हो गया, अब मेरे पास एनिमो की पावर आ गई। ओह ये कब अनलॉक होगा मेरा? वेट मिस्टर मास्क, तुम भी जिंशिन पैक खेलते हो क्या? ये देखो जियो का मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तुम भी खेलते हो क्या जिंशिन पैक? अनिकेत भाई, क्या आप रिडीम कमांड करेंसी चेंज करने के बाद लगाओगे? क्या लगाऊंगा? ये देखो, ये है जियो का स्टैचू, ये जियो का स्टैचू है हमारा। यहाँ से मैं रेजोनेट कर सकता हूँ। ये पता है कब अनलॉक होता है? जब तुम इन नेशन में पहुँच जाते हो, थोड़ी स्टोरी कुछ करके यहाँ पे पहुँच जाते हो। रेजोनेट, ये मैंने जियो से रेजोनेट किया। हाँ मैं खेलता हूँ, बेनेट 60 लेवल है मेरा, नाइस। ये देखो जियो की पावर्स आ गई मेरे पास। तुम्हारे पास बैनेट है? लॉल मेरे पास नहीं है, मेरे पास बैनेट नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रो की भी पावर है मेरे पास, मतलब हम इलेक्ट्रो भी ले सकते हैं। अब आएगा डेंड्रो। इलेक्ट्रो ट्रैवलर दिखाओ, दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रो ट्रैवलर भी दिखा रहा हूँ मैं। आजकल पता नहीं क्यों मैं इलेक्ट्रो भी यूज़ करने लग गया, ट्रैवलर। इलेक्ट्रो ट्रैवलर में थोड़ा सा मज़ा आने लग गया मुझे, पता तो है तेरे को। हेलो शे, वेलकम टू द स्ट्रीम। इलेक्ट्रो ट्रैवलर हमारे ये रहा इलेक्ट्रो का स्टैचू, स्टैचू ऑफ 7, राइडेन शोगन वाला। और रेजोनेट करना है इलेक्ट्रो से। ये मैंने ये आइलैंड अनलॉक कर लिया है। मुझे वो इलेक्ट्रो वाली लड़की चाहिए, वो ओपी है। कौन इलेक्ट्रो वाली लड़की? ये फिर कचिंग की बात कर रहे हो तुम? देखो इलेक्ट्रो की पावर। चलो अभी इलेक्ट्रो लेके चलते हैं। इलेक्ट्रो ट्रैवलर इज वर्स्ट। पहले तुम ये कह रहे थे जियो ट्रैवलर इज वर्स्ट, अब इलेक्ट्रो वाले को कह रहे हो। नाइस, बहुत सही जा रहे हो तुम। राइडन है ना, राइडन, राइजन नहीं, राइडन शोगन, RAIDEN। पहले यार जल्दी से ख़त्म करें, अभी तो मैं और 2 कैरेक्टर दिखेंगे। देखो राइडन शोगन तो ये है मेरी, हमारी गेम में जो मिली हुई है मुझे। अरे यार जूम नहीं होता, जूम हो जा, हो जा जूम। ये रही राइडन शोगन। और दिखा देता हूँ। ओह वही टाइपिंग मिस्टेक, ओके। और यहाँ पे कचिंग, ये रही देखो, ये जो बीच में कचिंग लिखा है ये है कचिंग, ये भी इलेक्ट्रो है। बस और क्या बताऊँ। मिस्टर माय गॉड, नाउ आई अगेन गैम्बल और लास्ट टाइम प्लीज वन। लॉल ऐसे मत करो, मुझे राइडन तो मिल गई थी, अब आयाका चाहिए मुझे। आयाका कुछ भी हो जाए, आयाका चाहिए। आयाका कैरेक्टर मिल जाए मज़ा आ जाए भाई। मुझे सारे कैरेक्टर चाहिए। अरे सारे कैरेक्टर अच्छे नहीं हैं। अब हम इलेक्ट्रो ट्रैवलर का यूज़ करके तो मैं इसके एलिमेंटल बर्स्ट सिखाएंगे। नॉइला है आपके पास? हाँ है मेरे पास, नॉइले है आप पे? हाँ मेरे पास है। आया कार्बन देखा क्या बोल रहा है निकेत? क्या बोला मैंने? एक्चुअली जियो ट्रैवलर इज बेटर देन एनी ट्रैवलर। अच्छा जियो ट्रैवलर, अच्छा एनिमो से भी अच्छा है। हाँ यार जियो पता है शील्ड प्रोवाइड्स करता है हमें, शील्ड भी देता है, डैमेज भी देता है, और एक फील्ड भी बना देता है कि जिससे हमारा डैमेज बढ़ता भी है। और एनिमो का तो मुझे इतना पता नहीं है, पर मैंने यूज़ तो किया है।
और इलेक्ट्रो भी सही है, इलेक्ट्रो बुरा नहीं है। देखते डैमेज फिर भी उतना ही है। अरे यार मुझे अपने आर्टिफैक्ट बदलने चाहिए थे, मुझे इलेक्ट्रो डैमेज बोनस देना पड़ेगा इसे। लाइटनिंग स्लैश। अब डेंड्रो को ट्रैवलर देखते कैसा आता है। डेंड्रो अब तो सुमेरु आ रहा है ना, तो पता चलेगा डेंड्रो का। हेलो क्या हाल चाल? ड्यूलुक है आप पे? मेरे पे है, मेरे पास ड्यूलुक नहीं है यार। हेलो एलन, वेलकम टू द स्ट्रीम। चैट में कौन सी हो गई? यस यस यस। क्या हो गया? हैप्पी। इलेक्ट्रो यूज़ करते हैं थोड़े टाइम तक। चलो इसे चेंज करते। इलेक्ट्रो डैमेज बोनस। एक मिनट, मेरे पास इलेक्ट्रो डैमेज बोनस 5 में है। ये कब मिल गया मुझे? यही तो मुझे इंतज़ार था इतने। एक मिनट, ये 5 स्टार में है? मुझे लगा 4 स्टार में मिला मुझे इलेक्ट्रो डैमेज बोनस। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है यार 5 स्टार में इलेक्ट्रो डैमेज बोनस। यही लो। मुझे लगता है डेंड्रो ट्रैवलर एनिमीज को स्टन करेगा, हो सकता है। चलो फिर मैं चला वीडियो में पे आरपी मिशन करने, फिर चिंचिंग खेलूँगा। ओके प्रो। वैसे तुम अगर थोड़ी देर रुक जाओ ना, तुम्हें वो पता चल जाएगा स्टोरी कि हम नए स्टोरी के वो कर रहे हैं ना, नए शेर पोया से। अरे गायनी और उसे शाओ से मिल लोगे ना तुम। लाल चलो जल्दी से यार, रोप वगैरह इसकी ढूंढे, जो भी चाहिए थे। बोर्ड चाहिए, बोर्ड उठाओ, यहाँ से उठाएंगे अब। निकलो। अरे उठाया भी नहीं, गंदा बच्चा। आया यार ले रहे हैं क्या? आया या के लिए तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अरे मिली नहीं क्या मुझे बोर्ड? मैंने उठाई तो थी। हाँ मिल गया। कौन आ गया? कौन है? क्या गेम लैग हो रही है मेरी? ये निपट गया, सबको से निपटाना है। अरे यार गया। और भी है क्या कोई? मैं तो जीत गया। चोरी नहीं है यार। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो गैम्बल में? इलेक्ट्रो ट्रैवलर बना दिया। अरे यार पता नहीं क्यों 1-2 दिन से मुझे इलेक्ट्रो ट्रैवलर में थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, तो अब हम इलेक्ट्रो गॉड को हरा चुके हैं, तो थोड़ा इलेक्ट्रो का मज़ा तो लेना चाहिए हमें। थोड़ा तो मज़ा ले इलेक्ट्रो का। ट्रैवलर के साथ सारे ट्राई किए मैंने, एनिमो भी ट्राई किया है, जियो तो करता ही हूँ। इलेक्ट्रो ट्राई करना कुछ टाइम के लिए करेंगे। मिल गया। पर ये है कि अभी इलेक्ट्रो डैमेज मेरे पास शायद इतना है नहीं, उस हिसाब से बिल्ट। कोई नहीं, हो गया कमीशन पूरा। जल्दी से अगले कमीशन पे निपटाते हैं यार। ये रहा फाइनल कमीशन है, सबमिट करेंगे। मेरा आर्टिफैक्ट डोमेन लक कितना ख़राब है यार, मेरा भी बहुत ख़राब है। तुम्हारा नहीं तो मेरा भी बहुत ख़राब है ब्रो।
हाँ इधर जाना है ना। चलो यार कमीशन प्रीमोजेंस इकट्ठे करने हैं। अनिकेत भाई आई बीटेड यू इन डायमंड। ओके प्रीमोजेंस बीट करना और मज़ा आएगा। क्या करना है इसमें? अरे यार हीलीचल टावर, ये तो हमेशा आता है ये वाला कमीशन। Rain outlines your fate. Take this. आज खेलोगे रात में? तुम खेलते ही नहीं हो यार। आया का हस्बैंड, तुम खेलते ही नहीं हो रात में। फॉलिंग थंडर, वैसे देखा जाए ना ये जो इसका इलेक्ट्रो बर्स्ट है ना, अरे यार कहाँ है? अरे यार मेरा बर्स्ट वेस्ट हो जाएगा। अरे यार वेस्ट हो गया यार। जियो ट्रैवलर चाहिए था मुझे इसे मारने के लिए। चल कोई नहीं, चढ़ के मार लेंगे। हर बार मैंने जियो ट्रैवलर से मारा है थे ऊपर वाले को। बाय। वैसे तो मुझे इनके साथ खेलने में मज़ा आता है, पर आज जल्दी निपटाना है। सारी हो गई ना? यहाँ टेलीपोर्ट करके जल्दी से ले लेते अपने प्रीमोजेंस। स्टडी, हाँ यार होता है यार स्टडी। एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं ना कॉलेज के। अब एग्ज़ाम डेज आ गए हैं। मई में एग्ज़ाम्स हैं, होते हैं मई या फिर अप्रैल के एंड में एग्ज़ाम्स चालू हो जाते हैं कॉलेजों के। जल्दी से सबमिट करते हैं यार। मेरी गेम इतनी लैग हो रही है, क्या है? मेरा पिंग तो सही चल रहा है, गेम की लैग है। कैथरीन जल्दी से मेरे प्रीमोस हो। प्रीमोस ओके। Ad Astra. Dispatch. मारा। मुझे सारा लीजा को भेजते हैं। ओके तो शुरू करें अपनी गानियों की स्टोरी क्वेस्ट। आई विल वो। अरे हर बार तुम गॉड से मांगते रहोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे कैसे? देखो मेरी भी कीज भी पुल हो गई, यूज ही नहीं कर सकता। क्या नाम है इसका? यूनिकॉर्नेस है। यूनिकॉर्नेस नाम से स्टोरी कोई ढूंढनी है हमें। आर्कन कुछ करनी ही नहीं, अभी स्ट्रीम पे दिखाएंगे। ये रहा। तो कहानियों की स्टोरी क्वेस्ट करते हैं तो हमें तो कहानियों को खेलने को भी मिलेगा। कहाँ जाना है? इधर जाना है। हाँ मुझे याद है, थोड़ी सी मेरी रैंडमली मैं उस जगह पे पहुंच गया था जहाँ पे ये स्टोरी कुछ शुरू होनी थी, तो थोड़ी बातचीत हो गई थी स्टार्टिंग में। कहानियों को ढूंढना था हमें। कहानियों कहीं चली गई थी वेकेशन पे, तो उसे ढूंढने जाना था एडेप्टर से मिलने। तब से मेरा माइक ऑफ था। लॉल में बोले जा रहा था कांट वेट टू सी ओनली क्विज। मुझे ये बता दो,
आया का हस्बैंड जोंगली की स्टोरी को इसके लिए और तो कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी ना कि इसकी भी स्टोरी कुछ पूरी होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए कि जैसे उसके साथ होया था आयातों के साथ, हमारा आयातों के साथ सीन हो गया था। इतनी सारी स्टोरी कुछ करनी पड़ गई थी हमें आयातों के लिए। मैं आराम से दिखाना चाहता था नहीं तो, पर इवेंट के चक्कर में मुझे दिखाना पड़ा। गानियों को ढूंढना था मुझे। भागो, हमें नहीं लड़ना, चढ़ जाओ। गानियों 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 गानियों। टेलीपोर्ट ही मारा सीधा। यहाँ टेलीपोर्टर है ना, वहाँ से लॉन्ग जंप करेंगे। चलो अभी गैम्बल बाद में, मजाक मस्ती पहले, ठीक है? अच्छा, कौन सी मजाक मस्ती करने वाले हो तुम, ज़रा हम भी देखें। चलो यार, मेरी गेम लैग क्यों हो रही है इतनी? इसका म्यूजिक ही बड़ा प्यारा होता है भाई। पता नहीं मैं यहाँ चढ़ क्यों रहा हूँ। ये तो मैंने कर दिया था, मुझे याद है। वहाँ जाना है मुझे, उड़ के जाएंगे, उड़ के खिंच जाएगा, खिंचो। Rain outlines your fate. हमें कहानियों को ढूंढना है इस जगह पे, और हमें कहानियों मिल गई। हो रही कहानियों, We found the Ganyu हाय। इतनी ऊंचाई। Person standing over there. That's Ganyu. We finally found her. Yeah. Hello Ganyu. Ganyu, here you are. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuehai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back. That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Did something happen? The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishu. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qixing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. पहले मैं बहुत करीब था, मेरे पास बच्चे कुछ 10 डायमंड थे, और भी बहुत लॉस होते, वो भी बहुत लॉस होते थे। पर वो कहते हैं ना, वक्त तो सबका बदलता है। मैं कंबल करता रहा, हार नहीं मानी, और आज देखो। ओके, नाइस होपी। After 1,000 years away, I came back to Jueyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now.
But... Who disturbs the peace of these mountains? Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. The matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, she would roll down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer? Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. One's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Gyaan Karst shall not be good for her. One will tell you more about her, if you should permit it. Most benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Gyaan Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liye Harbor feels even lonelier than Gyaan Karst. When I look at the sea of clouds in Gyaan Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liye, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liye hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Gyaan Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end.
She should be in the southern part of Mount Aotsong right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. अच्छा हैप्पी, तुम मेरे नाम से जो है गैम्बल कर रहे हो। नाइस, सही है यार, सही है। This trial will test her spirit. Even so, one hopes that it shall trouble her little. Ganyu? Why did you come here? Is that so? You really are interested in the ways of Adepti. This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. It's training time with Ganyu. देखते हैं क्या करना है। अच्छा पहले तो इसका बेल्ट है, गानियों का बेल्ट। नाइस। एमोस बो दे रखी है। ओके, नोबलेस है। ओके, हाँ चलो चले। अरे वहाँ एक सीढ़ी है। बारह करने हैं हमें। ओके, There's a lot of gliding around. It does feel like something Cloud Retainer would come up with. ओके। इधर जाना है। तीन है। यहाँ से निशाना लगाएंगे। हो गया। अब किधर है? उधर है। वो भी हो गया।
ये चल रहा है। Wow! Ganya's a really awesome shooter! If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. ओके गानियो ओपी ये क्या करता है इसका फूल सीली उधर कैसे जाऊँ मैं? अच्छा यहीं पे निशाना मारना है। लेट्स गो। अरे यार हो गया। अच्छा ऊपर यहाँ से उड़ना है। जल्दी करना होगा यार, काफ़ी सारे मैकेनिज्म अभी भी रह रहे हैं। ये चैलेंज पूरा करना होगा कैसे भी जल्दी हो जाए यार। मेरा फोन काम नहीं कर रहा जल्दी। अरे उठाना। अच्छा 3-3 इधर हैं। हो गया। We've completed the task. What do you think? I agree. You possess many qualities similar to those of Adepti, despite having none of their blood. ओके ओपी क्या हो गया? Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. फर्स्ट ट्रायल। Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is Who is it? The one. Conqueror of Demons. Oh, Xiao. Huh. So it's Xiao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? I found him unapproachable at first too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. चले चले। Of course we are. Let's go. शाओ से मिले। Where is Xiao? Where is Xiao? एपी ने मेरे नाम से गैम्बल किया और जीता, पर पॉइंट्स नहीं मिले, इसलिए बोला हूँ मैं कि मेरे नाम से गैम्बल मत करो। ओहो ओह हैप्पी। पहले भी उतने थे अभी उतने ही। आई थिंक ग्लिच हो गया। ग्लिच नहीं होगा वो। तुम लूज तो नहीं किया ना, मतलब बस हारना नहीं है। मैंने एक ऐसा नंबर भी सिलेक्ट कर रखा है, अगर तुम्हें गैम्बल में वो नंबर मिलता है तो तुम ना हारोगे ना जीतोगे। तो नो लॉस नो गेन था वो तुम्हारा। अंशिका भी आ गई। अरे अंशिका तुम्हारी तबीयत कैसी है? You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's all. Xiao is such a strict teacher. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. आज इन्फेक्शन लगा है तो टैबलेट आज शाम तक ठीक हो जाएगी। फिर ठीक है, आज शाम तक ठीक हो जाएगा ना। बस बढ़िया, नाइस।
I have nothing to hide. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready. Ganyu need sleep. अच्छा देखते हैं इस ट्रायल में क्या होता है. मुझे ना करना बस ये ट्रायल. गान्यू को करना हो. मुझे ही करना है. हेलो रैकर. ही बॉय. क्या करना है? Focus on the trial. I'm not here for idle chatter. अच्छा तो करना क्या है? ट्रू पोटेंशियल. अच्छा फाइटिंग है. फाइटिंग तो चल जाएगी. यूज चार्ज अटैक. हाँ मैं चार्ज अटैक यूज करता हूँ. लगता है तुम पीछे से सीन देख रहे हो. Paimon can feel it in the air. Even the weather's changed. ओके. No touching. नो टचिंग. ओ भाई डैमेज देख रहे हो. मजा आ गया देख के. हे पीछे लग क्यों नहीं रहा ये? किधर है? और वो रहे. नो टचिंग. अरे यार इससे अच्छा तो मैं अपना कैरेक्टर यूज ना कर लूं. Witness the power of Gua. Know my sword. नो माय स्वॉर्ड. Shine down. Torn to oblivion. निकलो भाई. निकलो जल्दी निकलो. मेरी गेम लैग हो रही है बहुत प्यारी वाली. और स्ट्रीम लैग ना होगा. कहाँ है और मॉन्स्टर? जल्दी लाओ. एक गानियों का बर्स्ट नहीं पता मुझे कैसा आता. अच्छा याद आ गया. नो टचिंग. कहाँ है मॉन्स्टर? वो रहा. Next on the agenda, born of ice and frost. All hail. और है इलेक्ट्रो डैमेज कौन है? अरे मैं भूल गया था ये. करा ही नहीं सकता. इतनी प्यारी लैग गेम में. नहीं भाई गिव ऑन करो ना बेचारी अंशिका. थोड़े डायमंड दे दो. नहीं यार गिव ऑन नहीं होगा. कुछ भी हो जाए गिव ऑन नहीं होगा. थंडर फ्लैश. किधर है? और वो रहे. सही दे रहा है. इलेक्ट्रो डैमेज बुरा नहीं है. लॉल मैं क्या कर रहा हूँ यार? को इलेक्ट्रो. लॉल इम्यून. लॉल वो रहे. अरे 76% को चला गया. Orders given. Orders received. ऐसे कैसे छोड़ोगे तुम लोग? No touching. नो टचिंग. अरे कौन हमला कर रहा है? Lightning flash! अच्छा यही है. अरे मैं फंस गया. इन्हें जल्दी निपटाना पड़ेगा मुझे. Inazuma shines eternal. निपट गए. अब किधर है? वो रहे. अरे यार ये इधर आ गया. इसे मारना जो है. मुझे हारना नहीं है.
Illusion shattered! Following thunder! Following thunder. Take this! उन्हें मारना जरूरी है. आजा 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 मर जा जल्दी मर जा. Lightning flash! Lightning flash. All hail. This is long overdue. अभी मैं चैट नहीं देख रहा. Now you shall perish. ये शाह से बात करनी चैलेंज कंप्लीट. नाइस. Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. हेलो ब्रह्मेंद्र सिंह. बैनी और सारा नहीं है ना मेरे पास सारा है. बैनेट नहीं है. पर बैनेट नहीं है, सारा है. लॉल. इतनी वॉचिंग आके सब चलेगा. नाइस. Rain outlines your fate. हील दे देते हैं. Life goes on. Life goes on and on and on and on and on. राइडिंग को देना है पहले तो. देखते शाह क्या देता है हमें. क्या कहता है. I've completed your trial. हमने किया है. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Okay. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave him to you, Ganyu. It's also a part of your training. Pesky visitor? So even here there are those that Xiao can't deal with? Oh heavens! Blessed be Rex Lapis! I've finally come upon the Adepti! Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. वाओ यार, तुम लोग कितने लकी हो. कितने सारे डायमंड. अरे अंशिका सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ जब नया बनेगा ना जो भी है, फिर सारे जो है रीसेट हो जाएंगे. शोगन प्लस सारा ओपी. अच्छी बात है भाई. शोगन और सारा नाइस. पर अभी मैं नॉर्मली रैंडम पिकअप्स ले रहा हूँ टीम के. Oh, so it's a pilgrim. Huh. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect! I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. For free? Do you mean that you charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. हेलो स्पाइडरमैन गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम. क्या चल स्पाइडरमैन, कैसे चल रही है तुम्हारी फ्रेंडली स्पाइडरमैन नेबरहुड?
फ्रेंडली नेबरहुड फाइडन वाली हरकत है। A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Ugh, how dare you reprove me? I bet you came here looking for the Adepti yourself. He might sorta have a point. We did come here looking for Ganyu after all. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. It's multiplayer game, yeah. It's multiplayer game. या ये मल्टीप्लेयर गेम है, पर एक लेवल पे एक एडवेंचर, तुम्हें एक रैंक अचीव करनी होती है मल्टीप्लेयर अनलॉक करने के लिए अपना। वरना तुम अपना नॉर्मली स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हो, तुम्हें मज़ा आएगा। स्टोरी में ही तुम्हारा ऐसे टाइम निकल जाएगा, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said, he was right. I thought that coming back to Gyaan Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, It's true. Just believe us. All right. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Gyaan Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go. अंशिका, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई पुराने रीति रिवाज है भाई, पुराने लोग, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। पुरानी सोच है ना, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। गाइस, कहाँ जाना है हमें? लियुए हार्बर। Let's return to the Liye Harbor. बट मम्मी पापा सपोर्ट करते बस, और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी पापा सपोर्ट करते हो, अनिकेत को तो संभाल लो। हैप्पी हैं? मुझे किस संभालना? मुझे किस संभालने की बात हो रही है? ये ज़रा बताओ कि मुझे I wanna know why I will be not in this world tomorrow. कुछ भी अंशिका, ज़्यादा नहीं हो रहा? क्या मत बोलो, अब गंदी बच्ची, दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। अब देख व्हील ऑफ लाइफ यार, मेरी गेम इतनी गंदी लैग हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम लोगों का तो देख ही रहा है कि कितनी लैग हो रही है। Healing Gopi. We're finally back. I'm still... Come on, Ganyu. We're almost there. You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right. Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. जॉडी ज़्यादा नहीं हो रहा, जॉडी ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा।
फिर ठीक है, पर ये गंदा मजाक था, बहुत गंदा मजाक था ये। ऐसे नहीं करते किसी के साथ। कहने के भाई मैं आ रहा हूँ, संभालो मुझे। मैं कैसे संभालूँ तुम्हें? Let's go for a walk in the port. Happy to come with. चले चले वॉक चले। कहाँ है फोर्ट? अरे मजाक सिर्फ मेरे साथ होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सही नहीं है मजाक। ये वाला मजाक बुरा था, बहुत गंदा था। ओके। अरे यार मैं वो करना भूल गया। Rise. शोगन नहीं, कोई नहीं, शोगन को थोड़ा हिल तो दे दे। पॉट पे चले। हाँ मेरी गेम लैग हो रही है बहुत। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे गेम को रीस्टार्ट करने दो। मुझे गेम को रीस्टार्ट करने दो। Leo's really got a lot going for it. बहुत गंदी लैग हो रही है गेम। थिंक, लेट्स थिंक। अच्छा मेरे पॉइंट लॉस हुए अभी तक 2 बार। ओके, आई थिंक हैप्पी भैया विल बीट मी। देखते हैं। हैप्पी इज फेमस। पाइमन ने उसका नाम लिया। वही हैप्पी। आई एम 50-50 श्योर। अच्छा तुम 50-50 श्योर हो? 50-50 तो हम जिनशी इम्पैक्ट में यूज़ करते हैं कि हम 50-50 हार गए, हम 50-50 जीत गए। लाल One, two, breathe. 3, 4, and on. Wow. Leo's really got a lot going for it. Try something new at the Wanmin restaurant. Let's go somewhere cooler. Should I save this money? People must have hired Wow. may have Leo has really got a lot going for it. 1, 2, breathe.
मुझसे कोई बात क्यों नहीं करता? अरे कौन है जो अच्छी बात नहीं कर रहा? आप बताओ सीम 1 क्यों क्वेश्चन क्या है? मैंने तो पढ़ा नहीं। बताओ सीम को हैंडल कौन करता? ए अनिकेत, बी सीम लैब, सी नाइट वॉट, डी ऑल। लाइफलाइन भी है। कौन सी लाइफलाइन है? Leo's really got a lot going for her. डी है आंसर, डी ऑल, डी है आंसर। 3, ये मैंने कौन सा मैसेज डिलीट किया? 2, 2, 3, 4. यह सी डी है। मुझसे कोई बात नहीं करता। लॉल अनिकेत करते हैं। अच्छा आई वॉन। कौन जीता? करेक्ट, सब करते हैं। मैंने बोला था पहले डी है, डी। हम सब हैंडल करते हैं, सिर्फ मैं अकेला हैंडल नहीं करता। स्ट्रीम लैब जो है तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करता है लाइव चैट पे। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, गेम खेलता हूँ। जैसे कि जिनशिन पैक खेल रहा हूँ, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, पर तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो थोड़ा कर रहा है ना वो स्ट्रीम लैब। और नाइट बॉट बीच बीच में सबको रिमाइंडर्स दे रहा है कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और थैंक्स आने के लिए। ये सब लॉक कर दिया जाए, मैंने बोला था कल। The sound of the waves in this familiar port. लॉक कर दिया जाए निकेत? हाँ लॉक कर दिया जाए। लाइफ लाइन्स आर 50-50, स्ट्रीमर्स एक्सपर्ट में। स्ट्रीमर्स कौन? स्ट्रीमर्स में क्या होता है भाई? स्ट्रीमर लाइफ लाइन में क्या होता है? The smell of the sea breeze makes me nostalgic. ओके। Ganyu, you didn't leave Liye for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh, that's true. Ganyu seemed to be working all the time. चलो भाई, गेम सही हो गई, गेम सही चल रही है अब। Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. ओके। It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Gyaan Karst, in fact. Is that? It is! It's Lady Ganyu. I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. स्ट्रीमर लाइफ लाइन जो भी स्ट्रीम पे आई है वो बताएगी। अच्छा तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं होना चाहिए एक्सपर्ट में मुझे। एक्सपर्ट में मुझे लो। अच्छा जॉर्ड, ओ भाई ओके जॉर्ड भाई या एक्सपर्ट। लाल Lady Ganyu? Why are you calling her that? Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tian. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Leo after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tian is a member of the Liye Qising, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qising? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tian is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. What an honor to receive such high praise from Lady Ganyu herself. I guess I must have done something right over the last, however many decades. Uncle Tian, please. A person of your standing should really stop calling me Lady Ganyu.
My apologies. It's not intentional, just a habit from my younger days. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the cheese sing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing's secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... Oh, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huisin. She seems to be a bit troubled recently. वेट अनिकेत रिप्लाई क्या मेरा क्या मेरे को नहीं कौन सा रिप्लाई कैसा रिप्लाई चाहिए तुम्हें मेरा लाइफ चाहिए किसी की नहीं चाहिए अच्छा हु इज अनिकेत फॉर सब्सक्राइबर टू कम तश्री जॉर्ड अंशिका हैप्पी नन ऑफ दी बाय द आई आल्सो डोंट नो डी है इसका आंसर डी है टैलेंटर इसका आंसर डी है अगेन इसका आंसर डी है क्योंकि तुम जो जो 3 ऑप्शन है उन तीनों में से कोई नहीं है जो फर्स्ट सब्सक्राइबर 1 मिनट हुई द फर्स्ट सब्सक्राइबर टू कम टू अच्छा मतलब सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ की बात हो रही है वो तो मुझे भी सच में याद नहीं है मुझे भी नहीं पता कैम्बल ऑल हेलो वैशाली वेलकम टू द स्ट्रीम Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? गानियों से मिल लो वैशाली गानियों I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. हेलो क्वीन श्रुति May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. ब्लीडिंग हो रही है क्या हो गया गानियों गाएगी गाने अच्छा वेलकम टू द स्ट्रीम कैसी हो अंशिका तुम्हें पता है क्वीन श्रुति गेमिंग भी पुरानी सब्सक्राइबर है मंगस की हाय क्वीन श्रुति आ रही न्यू नो वो न्यू नहीं है वो पुरानी सब्सक्राइबर है हमारी ओल्ड सब्सक्राइबर ओपी With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Let's move then to Yuhai Pavilion. पुरानी सब नाइस हाँ इतने दिनों बाद कोई अरे वो कल भी आई थी तुम्हें पता नहीं है आती कि नहीं बिजी है यार जॉर्ड इज फर्स्ट इन स्ट्रीम नॉट तो ये इतने मन से आती क्यों नहीं थी अरे बिजी होगी ना मैं सबसे पहले स्ट्रीम में कैसे आया नहीं जॉर्ड तो नहीं आया डोंट नो दिस आंसर एनीवे लॉल कोई नहीं था आंसर इज डी यस आंसर इज डी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि कौन था बस Don't think too much about it. My daughter really needs Ganyu's help, and there's nothing more to it. क्या कहाँ जाना है अब गेम सही चल रही है पहले बहुत लैग थी चलो अच्छी बात है माय किस्मत ओपी क्या विजन का क्या है rumor had it when someone wishes the call to appear upon and the vision will appear ओके उनमें से कोई नहीं था हैप्पी बीटेड अनिकेत अरे ठीक है बाय अनिकेत बाय क्रॉस यू टाटा मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता सही कहा कोई नहीं आ सकता तुम्हारे रास्ते में हेलो एटो मी एक्स वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो किसके लिए पुल करना बेटर है शाओ काजुआ या आयाका
पर मेरे हिसाब से तो मुझे शाओ और काजुआ के बारे में इतना पता नहीं है, पर मेरे ओ नो व्हाट द हेक इज गॉन। ओ नो बच गया भाई। अभी कैमरा ऑन हो गया था, मैंने उंगली लगा रखी थी, बच गए। अभी फिर से बिल हो जाता। मेरे हिसाब से तुम्हें शाओ के लिए जाना चाहिए। वैसे तो काजुआ सपोर्टर है, आयाका के लिए मैं जाऊंगा। काजुआ इज मस्टफुल। मैंने सुना तो है कि काजुआ के लिए ही जाना चाहिए कईयों से, पर होता है तो अभी सीन हो जाता। ला 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 ला। कैसे स्ट्रीम लैग हो तो मुझे बता देना। काजू आई डोंट नो। अच्छा तुम काजुआ को नहीं जानते? कल की स्ट्रीम में काजुआ आया था, मेरी काजुआ था मेरी स्ट्रीम में। एक मिनट, यही था मैं जेट चैम्बर पे लेके जाते थे। रैचे नहीं, वेट भी नहीं हुआ, तब मैंने उंगली रख ली ना कैमरे पे, इसलिए बच गए। Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Weishin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qising to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuahai Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. Yep. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of 2 stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. All right. Let's approach it this way, then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. चलो भाई फॉलो करे। लेट्स गो। क्या स्ट्रीम थे? एक काम करो, तुम दोनों साइलेंट और रहकर थोड़ी देर के लिए चले जाओ स्ट्रीम से। क्यों ऐसा क्यों भगा रहे होते हैं? और रियली सीट क्या नहीं देखा? रहकर बीटेड में। अच्छा, अरे वह ध्यान नहीं देते ना, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता इतना डायमंड्स पे। चलो चले पेविलियन में। हो एज यू ऑल नो गाइस, जो स्ट्रीम देख रहे हैं कि 1 या 2 तारीख को जब भी मेरी स्ट्रीम होती है नए मंथ में, उस दिन जो सब्सक्राइबर ऑफ द मंथ अनाउंस होता है और ये पॉइंट रीसेट हो जाते हैं। तो अब लास्ट के कुछ टाइम ही बचा है, तो तुम लोग अपने पॉइंट जितना हो सके उड़ा लो।
फिर पता चले कि तुम लोग दुखी हो रहे हो। कहाँ जाना है? नहीं तो जाना था। लो नीचे जाना है। चलो नो माय स्वॉर्ड, ये तो वही है जिससे हम मिले थे जोंगली किला। Aha, we meet again, traveler. And you must be from the Yuehai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuehai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongshan. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Oh, tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Ah, here, I found it. क्या हो गया तुम लोगों को? लव गॉड अगले मंथ ही होंगे रे। अगले मंथ करना रिफ्रेश पॉइंट प्लीज। अगले मंथ ही रिफ्रेश होंगे, अगले मंथ ही होंगे। जब 1 या 2 तारीख आ जाएगी, जो मंथ आ रहा है कमिंग मंथ, उसमें होंगे। That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh, he even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? He might have destroyed all the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongshan. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. चलो चले चिंगशे विलेज। कॉन्गो किसको कॉन्गो दे रही हो? काफ़ी दूर है ये। मुझे रैकर को करना है बट बहुत दूर हूँ उससे। कैम्बल करो, कैम्बल ओपी। कैम्बल में जीतने का ट्राई करो, क्या पता हो जाए। बीट
जॉर्ज ने भी तो एक दिन में वो अपने 1 लाख वो 2 लाख किए थे, मुझे याद है एक। पर ये है कि वो लॉन्गेस्ट स्ट्रीम थी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम थी। और नो जॉर्ज भैया क्या हुआ? अब जीता क्यों नहीं? कौन नहीं जीतता, कौन हार गया? ओ माय गॉड 10,000 पॉइंट हार गए। हैप्पी भी हार गया। हैप्पी ऑल द लॉस ऑल गैम्बल। तुम भी गैम्बल करोगे मदन केतरी? वेलकम टू द स्ट्रीम बाय द वे। करो 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 करो, देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतेगा। हमें बैठना नहीं था। ओए रेक्स इनकॉग्निटो, ये कैसा नाम है भाई? किधर जाना है हमें? इधर। ओए यहाँ चेस्ट है, वही प्रीमोजेंस कर सकते हैं इससे। Rain outlines your face. अरे यार मिल गया। There is no escape. मिल गई, चेस्ट मिल गई। A reward on the road. ए 2, इससे तो 5 मिलते हैं। ये चीटिंग है, ये चीटिंग करता है, ये चीटिंग है, चीटिंग करता है, तू चीटिंग करता है। मैं उल्टा चढ़ रहा हूँ। मुझे जाना उल्टा, मैं गलत साइड जा रहा हूँ। अरे यार उधर जाना है मैं तो। मैंने की है मेहनत, हाँ मैंने देखा है मेहनत तुम्हारी। जॉर्ज कैम्बल 20, 1 मिनट, तुमने भी कैम्बल किया था ना? पायरो के लिए करो, पायरो तो गैम्बल। तुम तो सही से भी नहीं लिख पा रहे हो मदन ब्रदर। तुमने गैम्बल किए थे 20, उसका रिजल्ट आया? नहीं आया अभी तक, दोबारा ट्राई करो, आ जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। Ah, welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Kingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. I'm sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself.
And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. ये अंकल जी बुड्ढे तो लग नहीं रहे, इनके बाल तो पूरे काले हैं, बस पीठ अकड़ी हुई लग रही Take है. back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Okay, fight time, fighting time. बूढ़े अंकल Wait, की मदद करनी I है. think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. It's one of the Fatui. फटुई. They must be plotting something against Liyue Harbor. Again. Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. सिखाएं लेसन जरा जाके. कहानियों को ऐसा प्लेबल कैरेक्टर नहीं मिला हमें. Right now. Olax. हैप्पी ने 10,000 लूज किए. गैम्बल ऑल. तुमने भी गैम्बल ऑल किया. ओह नाइस, तुमने पॉइंट डायमंड जीत लिए. नाइस. अरे मैंने ना धूप में, मेरे नाना ने धूप में बैठे रहे थे, उनके भी वाइट से ब्लैक हो गए. अरे उसे टैनिंग कहते हैं. टैनिंग हो गई उन्हें. टैनिंग कहते हैं उसे. हाय साइलेंट कीपिंग. हाइड्रेट टैनिंग कहते हैं. चलो फटोई को हरा है इलेक्ट्रो ईथर की मदद से. Take this! Thunderfly. Illusion shattered! Freshness preserved. Chill to the bone. Life goes on. Life goes on and on and on, on and on and on. Witness the power of Guhua! अब ऐसे ही हराना पड़ेगा. Now you shall perish! नहीं बट डैमेज भी नहीं दे रहा. ये क्या हुआ आधे में ही? You scoundrels! अच्छा नाइस. अमीर लोग कहाँ हैं अमीर लोग? क्या प्लीज कैम्बल ऑल. अरे क्यों प्लीज मत करो यार, वो कर देगा. I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? No. Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all.
I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for Tui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice, then? I'll get back to my berries. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. अरे गैम्बल से सिर्फ 10 के लॉस और 20 के विन है होगा, ज़रूरी नहीं है। मैं करके देखता हूँ, देखते हैं। नहीं रखो पॉइंट, अमीर बनाओ। पॉइंट्स नहीं है, वो डायमंड्स है पहली बार। ओ लिमिट है बस। अच्छा चलो नाइस। मैं चली अपने प्यार के लिए। ये गाना अच्छा लगता है। टाटा वैसे टाटा। No worries. बिरला। It's always nice to teach the Fatui a lesson. टाटा बाय बाय वैशाली। टाटा बिरला। Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. Wheel of Life. No, my sword! Faster? Okay, faster. Rain outlines your fate. So this is the warehouse. Seems like those troublemakers were nothing more than a few hero churros. Let's show them what we got. Bellowing thunder! Take this! There is no escape! Torn to oblivion! Illusion shattered! Lightning slash! Rise. I let my guard down. There is no escape!
Illusion shattered! Lightning slash! Now you shall perish! Life goes on. Sacred name, fortune preserver. Let me read you a verse. Shine down! All clear! Quick, let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too! Inactivity serves no purpose whatsoever. Second Lives! We finally found it! Let's bring this invoice back to Huishin. क्या चल रहा है भाई चैट में समझ ही नहीं आ रहा मुझे All the world holds dear is but a backdrop of constant अच्छा motion. तुम्हारे पॉइंट्स का ही चल रहा है I stand before it, alone and unchanging. पॉइंट्स का 3 ओके मेरी गेम पे लैग हो रही है तो मुझे लग रहा है अपनी गेम को रीस्टार्ट मारना पड़ेगा मुझे रुक जाओ रीस्टार्टिंग हो जा स्टार्ट हो जा हो रीडिंग अनेबल कब होगा अमंग अस की स्ट्रीम्स में होगा वो
अमंग अस स्ट्रीम्स में होगा, इस स्ट्रीम्स में नहीं होगा क्योंकि ये बहुत हैवी गेम है ना, तो वो ले नहीं पाता मेरा, तो हमारी प्रॉब्लम हो जाती, प्रॉब्लम। अमंग अस स्ट्रीम्स में तो अमंग अस स्ट्रीम कब होगी? अमंग अस स्ट्रीम तुम्हारी थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे को होती है। और न्यू रिडीम आने वाला है। हाँ, न्यू रिडीम आने वाला है, प्रीमियम रिडीम। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे संडे स्ट्रीम होती है। ओवरऑल सैटरडे संडे जेंशिन, बाकी टाइम वो हो गई। और किसी ने मुझे शैडो फाइट 3 का वॉक थ्रू करने को कहा है। मैंने शैडो फाइट काफ़ी एंड तक खेली तो है, पर इतना मज़ा फिर बाद में मुझे आना बंद हो गया था उसमें। मुझे याद है उसका, शैडो फाइट का। प्रीमियम रीडिंग कौन कर सकता है, उसका चार्ज कितना है, वो सब पता चल जाएगा जब नेक्स्ट स्ट्रीम में आएगी वो अमंग अस की। चलो सी, ये तो सही हो गया। ला 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 ला, अभी करना पड़ेगा। तो गान्यू की अभी तक पूरी नहीं, शाओ की कैसे करेंगे हम पूरी? Miss Ganyu, you're back. Yeah, Ganyu is back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? करते हैं nice chatting with the owner. Still lag. लॉल, गेम मेरी still lag हो रही है। यहाँ पे ही ड्रैगन मर गया था, मुझे याद है। यहाँ से हम भाग रहे थे, मैं नहीं जाना, लेकिन ये हमने विश की थी कि हम सिस्टर से मिल जाए जल्दी से, मतलब कि लुमीन से। फाइव टिप्स लड़कियों में कैसे फेमस? ओह लॉर्ड सतन, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यू कांट डिबीट मी। अच्छा, मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मुझसे पूछ रहे हो। खुद फेमस बैठे और मुझसे पूछ रहे हो। सही है भाई, सही है। I can defeat Jot. Yes, you can. ये क्या? नहीं, ये नहीं है, ये है सेकंड लाइफ। सेकंड लाइफ, दूसरी लाइफ। Isn't it Huixing from the Yuehai Pavilion? I remember you. Yeah. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. Wrong. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. Wrong. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. Yep. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd.
ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ हाँ ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे ओवर नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, पर इस बंदे में ओवर कॉन्फिडेंस है। He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't. सर जी टिप्स दे रहे थे, कौन सी टिप्स? हम कौन सी टिप्स देंगे तुम्हें? तुम्हें हमको टिप्स देनी चाहिए भाई। देखो चैनल कितना बुरा हाल चल रहा है चैनल का हमारे, कोई देखना ही नहीं आता स्ट्रीम, 4 की वॉचिंग है और कभी कभी 0 रहती है ज़्यादातर जिनशीन इम्पैक्ट में, कोई आता ही नहीं है, मज़ा ही नहीं आता किसी को, क्या कोई इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, बता नहीं कि आजकल स्टोरी गेम में। हेलो आया कार्बन, वेलकम बैक। आया कार्बन तुमने वैसे मिस कर दी कल की स्ट्रीम, जब आयाका आई थी स्ट्रीम पे, हमने आयाका को बता दिया कि तुमने हुताओ को क्या बोला था। चलो भैया आपने नोटिस किया 2 बार पॉइंट जीत रहे हैं और 1 बार लॉस रखता है, लॉल। Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Bolai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. Yep. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. स्टोरी में सच में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, जब इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से तब लोग रुकते हैं, बेशक से कुछ ना करो। अच्छा मैं था भाई पर लेकिन नहीं रहा था, दूसरे तब से सुन रहा था। तब तुम नहीं थे जब आयाका आई थी, जब तुम नहीं थे आयाका हस्बैंड, आई एम डेड लॉल। अब तुम्हारी वाट लगने वाली आयाका हस्बैंड, आयाका को सब पता चल चुका है स्टोरी में। हाँ यार, पर यहाँ पे पता है ये लोग पॉइंट्स कैम्बल ही चलता रहता, अब मैं क्या बात करूँ, ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. Yep. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. Achha. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. I want voice over in side quiz. यार हाँ यार, साइड क्विज में, वर्ल्ड क्विज में जो है वॉइस ओवर होना चाहिए यार, सच में बोरिंग हो जाती है वो तो। सच में वाट लगी आया का हस्बैंड की, सही कहा। अब लट पड़ेंगे आया का हस्बैंड को। सच में यार, सच में बहुत बोरिंग हो जाती है। बल्कि वर्ल्ड क्विज भी एक मेन में आती है, क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में, दूसरी कंट्री में, नेशन में लेके जाती है हमें। ये गलत है हमारे साथ। Ganyu solved both Huishin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness.
That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. Alright, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat! Oh, come on. It's just a meal. तो हम भी तो मील If it's खिलाते just a हैं meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixing. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. Okay. All right. We dare not refuse such generosity. ओके मेरे को 10 के बस। अच्छा देखो जॉर्ज भैया 2 बार जीत रहे हैं और 1 बार लॉस्ट। सही कह रहे हो भाई। ये पता है खेल सारा है कि तुम्हारे डाइस पे कितने नंबर आते हैं, गैम्बल के टाइम पे कितने नंबर आते हैं। मील कानी को बस तुम चिंग फ्लावर दो वो खा लेगी, पर पाइमन और ईथर का क्या? वो तो बहुत खाते हैं। हाँ क्योंकि वो कोकोगोट है। ये भी सही कहा, कोकोगोट। अरे मेरे रेसिन्स पूरे हैं। मुझे पहले तो अपने रेसिन्स को कन्वर्ट कर दे तो कंटेंट में, ताकि ये टाइम चल रहा है ना वो बंद आ रहा है। ये क्राफ्ट मटेरियल, क्राफ्ट ट्रे बोलते थे। बना दो भाई 4। इधर जाना है, इधर जाना है हमको। आई एम अनलक्की। अच्छा तुम अनलक्की हो, तुम बल्कि लक्की हो तो आया तो लेके बैठे हुए हो और कह रहे हो अनलक्की हो। सही है भाई, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कभी ऊपर कहता कभी नीचे कहता, कितनी गलत बात है। ये रहा। अच्छा सीधा अंदर जाना है हमें। आया कर मैंने मीम डाल दी तुम्हारे लिए। अच्छा कहाँ? 1 मिनट। क्या है? टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? नीम लहसुन पुदीना। नीम लहसुन पुदीना है कुछ भी। इसका आंसर मुझे नहीं पता। चलो भाई शाही खाना खाएंगे, मज़ा आएगा। Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you.
Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuehai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huishin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. एक मिनट, क्रांति चैटे रह गई, वो देखो पहले. गुड वाइब्स, वाओ. अरे आया हस्बैंड गोबर के साथ तुम गुड वाइब्स ले रहे हो, अच्छी बात. देख मेरी बात सच निकली, तीसरी बार लॉस्ट. कुछ तो बोलो. अच्छा बोलो, क्या बोलो. सही कहा था लेटर. अब दोनों बार गैम्बल ऑल और गैम्बल 33वीं बार. ओहो, तेजी भी निकल ले हो क्या भाई. आई डोंट लाइक गान्यू स्टोरी दैट मैच. अच्छा कोई नहीं. अरे यार मैंने गलती से स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे ये ख़त्म करनी है. क्वेश्चन 5 वर्ल्ड क्विज में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है और कहाँ है. पार्टी ए डिज्नी, बी टुमारोलैंड. अरे टुमारोलैंड. आई हैड मच हाई एक्सपेक्टेशन. विद होम. थैंक्स टैलेंट बताएं टेलिंग दिस ट्रिक. डिज्नी. वेलकम हैप्पी भैया मेरे घर में. अब तुम्हें ट्रिक पता चल गई है ना, मैं चेंज कर दूंगा. अब तुम्हें ट्रिक पता चल गई है ना, तो मैं चेंज कर दूंगा इसको, इसके फीचर्स. Witness. It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through. The stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huishin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor. Apart from my contract with Rex Lapis, they rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Chi Sing secretary. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? I'm still hungry. लॉल, अभी तक तो हमने कुछ खाया भी नहीं है. हाँ क्या कह रहे हो तुम लोग. नहीं ऐसा मत करो अनिकेत भैया, प्लीज नेक्स्ट मैच चेंज करना. अरे देख नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ. नो पांथर इज टुमारोलैंड एंड वो बेल्जियम में है. अरे सच में नो पांथर टुमारोलैंड वो बेल्जियम में है. अच्छा मुझे पता नहीं था. चलो अच्छी बात है, तुमने मेरी नॉलेज बढ़ाई. ट्राई करो, जीतोगे 100%. ट्राई करो कैमलॉर. जीत गए. उसके लिए लोग आईफोन से ज़्यादा खर्चा करते हो. प्रो मतलब ये फंक्शन आप रखते हो क्या कि कितनी बार जीतना कितनी बार हारना. नहीं हैप्पी, ये मुझे भी तुम लोगों से पता चला कि स्ट्रीमलैब ऐसा कर रहा है. स्ट्रीमलैब ऐसा कर रहा है. मुझे भी नहीं पता था कि स्ट्रीमलैब ऐसा कर रहा है.
मुझे आज पता चला। शाओ मस्त है, बस एक ख़राब है ये है कि उसे एक डेडिकेट टीम आर्टिफैक्ट सेट लगता है। अच्छा, वहाँ पर मार्शमैलो भी है था एक टाइम। अच्छा, ट्रू आया आकाश में। चलो चले, टॉक टू द जेड चैम्बर सेक्रेटरीज। किस जगह जाना होगा सेक्रेटरी से बात करने के लिए? हमें एक पिन क्यों लगाया मैंने इस जगह? अच्छा हाँ, इस सिल्क फ्लावर्स के लिए मैंने लगाया था, मुझे याद आ गया। लेट्स गो एंड टेलीपोर्ट। यार गानियों की स्टोरी कुछ ख़त्म नहीं हो रही यार, जल्दी हो जाए यार, ताकि हम लोग वो कर सके शाओ की स्टोरी कुछ। पर गानियों भी क्यूट है यार बहुत। देखा जाए तो अनिकेत ने चेंज कर दिया शायद। मैंने कुछ नहीं किया अभी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया। कभी कभी वर्क नहीं करता है। अच्छा, मैंने बताया ही सबको गैम्बल का फंक्शन। थैंक यू बोला मुझे। अच्छा, देखते कभी कभी वर्क नहीं करता। अनिकेत ने चेंज कर दिया शायद। नहीं, मैंने किया लोन, मेरे पास शाओ के लिए सपोर्ट है पर शाओ ही नहीं है। लोल भाई, आई थिंक दोबारा आते हैं तो आज जीतते, क्या पता। प्लीज गॉड। तो बार बार गॉड को परेशान कर रहे हो इस छोटी सी बात के लिए, तो गॉड भी तो गुस्सा होंगे। आता है। देखो मेरे भी दोस्त, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। लेट्स गो। सबसे पहले इनसे ही बात हुई थी कहानी इसमें मेरी, पर वो गलती से हो गई थी। लेट्स सी क्या होता है। Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look who's back. Yeah, Ganyu You is even back. have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break, we wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all, given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Acha. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. क्या कह रहे हो? गानियो एडेप्टा ही है ना, वो हाफ एडेप्टा है, वो ह्यूमनॉइड कह सकते हैं, एडेप्टॉइड ऐसा ही होगा फिर इसका तो। गैम्बल जिंदगी। अच्छा, तुम जिंदगी गैम्बल कर रहे हो अपनी। अगर इस बार जीता तो यही फंक्शन है, देखते हैं। हमको बीट करना है, में कुछ खास मज़ा नहीं आता। अच्छा प्रो, आई थिंक कि ये दोबारा पता नहीं। मैच भी लाइक आफ्टर 10th मौत से मिला कर तुमको ज़िंदगी से छोड़ देंगे। अच्छा, ज़िंदगी छोड़ देंगे। अच्छा, ओह कोड एस एडेप्टर गानियो। I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined.
चलो हमारी वजह से कोई तो खुश हुआ. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? ये तो सोच रही है कि हमें इसके साथ वैसे वाला अच्छा लगता है. फील समझ रहे हो? Sure, but are you ever done with work, Ganyu? पता नहीं. बेचारी उदास हो गई. कितनी खुश थी यार वैसे ये हमारे साथ आने के लिए. अगर गान्यू हमारे साथ होती ना, साथ में ही बिल्कुल वैसे दिखाते हमारे एडवेंचर में. एक एरिया हो जाए गान्यू ही घूम रही हमारे साथ, मज़ा आ जाए. Let's cross that bridge when we come to it, shall we? अच्छा. Finally, Ganyu story quest completed. Primo gems का है मेरे 60 primo gems. Nice. Oh my god. मेरा BP 22 हो गया. कब होता वो भी. मैं आयाका के साथ ही खुश हूँ. अच्छा ये किसने बोला? मैं मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि नॉर्मल हमारे साथ चले फिरे घूमे फिरे. ऐसे नहीं कि प्लेवेल कैरेक्टर हमें मिल जाए. गानी हो. All will be revealed in the next volume. बताओ भी. चलो शाओ की स्टोरी कुछ पूरी करें. हमने ये तो कर दी. शाओ की स्टोरी कुछ कौन सी है वैसे? नाम क्या है इसका? है एटलस चैप्टर एक्ट 1. एटलस चैप्टर 1. ये रहा. It was on a deserted moonlit night that the hero approached the vile अरे dragon's हाँ, limpid मुझे lair. याद आया. मैं हिलीचल से मिला था कुछ वांगशु इनमें जब मैं सिल्क फ्लावर इकट्ठे कर रहा था. कुछ अजीब ही थे. थैंक यू आई वॉन्ट. नाइस. अच्छी बात है. जीत गए. BP 22 डॉक्टर को दिखाओ. अरे गेम का कह रहा हूँ. बैटल पास. BP बैटल पास ही होगा जरूर. इतना परेशान ना हो. आयाका तुम्हारा क्या हाल करेगी तुम्हें पता है ना. तुम्हें जमा के मारेगी. जमा के. आयाका हस्बैंड. Could it be true? What I've heard? हाँ मुझे याद आया. वैसे देखा जाए तो आया का हस्बैंड तुम जो है मेन एज आया का यूज़ करते हो. पर आया को ईथर पसंद है जो कि मैं यूज़ करता हूँ ईथर. तो मैं क्या समझूं कि आया का मुझे पसंद करती है. ईथर को पसंद करती है. राइट. No, my sword. ओए इन हिलीचर्स को क्या हुआ है? ये तो शाओ वाली इसमें प्रॉब्लम है. Take this. ये क्या गिरा? Illusion shattered. Take this. Oh my god, क्या डैमेज थी. शाओ देखेगा हमें शायद. नहीं.
These super evil hilly trolls are more difficult to defeat than the usual kind too. नहीं यार, हमने जल्दी हरा दिया. पाइमन को गलत फहमी है. Hey, seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. ये तो sigil of permission है. ये क्या हो रहा है? Whoa! See that guy in the mask? He scared off all the hilly trolls. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. सही कहा. But the magic he was using seemed even more adeptus-y than Xiao's. Shall we go say hi? Now I'm going to sleep. Bye all who came to stream. अच्छा चचा बेटा अनिकेत कुछ ज़्यादा नहीं हो गया. अच्छा आया का हंस रहा है. आया का हस्बैंड हंस रहा है. अच्छा जी. Now I'm going to that thing जिससे ओशन गॉड आया था. हाँ सिजिल ऑफ परमिशन. पर ये थोड़ा अलग में दोबारा आ रहा है. मज़ा आ रहा है. शाओ के साथ मिलकर लड़ेंगे. शाओ एज ए प्लेबल कैरेक्टर मिलेगा या शाओ का बिल्ड देखूंगा. वह गानी का तो देख लिया मैंने. मुझे लग रहा है कि अपना ये चेंज करने की ज़रूरत है मुझे. स्टार स्नैचर. Hello, allow us to introduce ourselves. This is... Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Think nothing of it. One certainly doesn't. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we have not met. My name's Paimon, and this is my sidekick. अच्छा ये साइड के क्या बारी हम नहीं है. Then it is right that our paths coincide. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars, though one is better known to one's followers as Star Snatcher. Snatcher है हमारे साथ. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. शाओ की सस्ती कॉपी. सही कहा. वाह हम साइड किक. मस्त जोक मारा रे पाइमन. सही में शाओ तो खतरनाक मैंने देखा था. हाँ शाओ नहीं है ये. मैंने भी शादी थी को टॉप आज मैं बीट करके जाता हूँ. बहुत क्लोज हूँ उनकी. करो करो. वाओ हम साइड किक. बस भाई साइड किक पाइमन है. सही कहा यार. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and liye were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. तालियां क्यों बजा रहे बार बार. Take the follower to find out about the tug. Okay, follow the male believer. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now there is finally some hope for my ailing father. Watching him use his magic is all the proof you need. A true Adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent.
My father will recover soon. I just know it. Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an adeptus like the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है. The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? एक मिनट, ये तो वही बंदा है जो उसे परेशान कर रहा था शेनहा को उस स्टोरी उसमें आर्गन को इसमें नाच को रिया पीछे. What do you know about the Master of Stars? What? मुझे ये गड़बड़ लग रहा है बंदा. Among Us X Genshin. अच्छा लेवल किसका लेवल? Silent is very silent. I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of an adeptus is a monumental affair. Just look at the rite of dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of liye would be willing to. मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस चार के बारे में. इस चार स्नैचर ही कुछ तो गड़बड़ है. Finally, a life full of hope and purpose. Oh, are you believers too? No. After my fiancé had been left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiancé back, in which case I wouldn't need it anyway. मुझे क्या लग रहा है आया का सैड लॉल. मुझे भी गड़बड़ लग रही है. फाइनली आया था वहाँ कुछ गड़बड़ आया था. पता लगा मुझे पता क्या लग रहा है. ये चार स्नैचर जो है ना, ये फेक अडेप्टस होने का, ये फेक है. ये अडेप्टस होने का नाटक कर रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है. लेट्स सी क्या पता थी स्टोरी हमें. और शाओ तो अभी तक What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. क्योंकि अडेप्टस की ऐसे अडेप्टस पहली बात तो ह्यूमन वर्ल्ड से जल्दी कनेक्ट नहीं होता. सबसे मेन रीज़न ये भी है. और ऐसे किसी तरह ऐसे छोटे मोटे काम के लिए तो अडेप्टस जाते भी नहीं हैं किसी ह्यूमन की रात के लिए ऐसे. Surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wuliang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Diminutive friend क्या होता है अब ये? Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. या फिर याक्षा में तो कोई एक नया याक्षा हो. My favorite song is Dead Bad.
हीट वेव एनिमी और हीट वेव तो पता है, डेथ बेड मैंने नहीं सुना। अभी एक ही आदमी हमें बता सकता है कि कौन है ये। कौन? शाओ बता सकता है क्या? मेरा का फेवरेट सॉन्ग है इमेजिन ड्रैगन बिलीवर। नहीं, मेरा नहीं है। मैं बिलीवर अच्छा लगता था मुझे पहले, बहुत अच्छा लगता था जब मैं 11th-12th में था, पर अब नहीं। पर मैं सुन लेता हूँ कभी कभी। हेलो अर्नब भट्ट, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? अरे 1 मिनट रुको गाइस, मैं एक चीज़ करना भूल गया, मुझे याद आया। Now then, what are your wishes? 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या कह रहे हो तुम लोग? हुई और मेरा और भी फेवरेट है हीट वेव, डायमंड आई, डार्क साइड, रेन। ये चीज़ नाइस। चलो कंटिन्यू करें। अरे वो आया था ना, उसने कुछ बोला नहीं? अर्नब भट्ट, कैसे हो ब्रो? Indeed. A great many obstacles may be overcome, given commensurate power. But one cannot but wonder, what grudge have you against the gods? Yeah. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. देखते हैं। What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. Let's see क्या होता है। What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right! Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? हाँ, एडेप्टर पहली बात कुछ मांगते नहीं है। और Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food, can they? Yep, a tasty snack is sure to work. बाय कहाँ जा रहे हो? कौन जा रहे? बाय चलें तो गेमिंग। कैसे जाने? Why don't we head over to Wanwen Bookhouse and see if they got any new recipes in?
कहाँ जाना है हमें? इतनी दूर जाना है हमें, इतनी दूर, बहुत दूर है ये तो, बहुत दूर। साया? क्या साया? ये साया क्या होता है? टेल मी व्हाट इज साया। अरे यार जियो स्टेच के पास जाना नहीं हो रहा मेरा। हाँ ऐसे ही चला जाएंगे ना ऊपर बिना सीढ़ियों के, मुझे दिखा रहा है। कोई टिप्स दे दो, मैं कहाँ से लाऊं यार टिप्स? ऐसी टिप्स मुझे भी नहीं आती। So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Star Snatcher. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Yep. Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? सी वैसे कहाँ से हो? हम दिल्ली से, इंडिया, दिल्ली, इंडिया। I also found him fishy. Could be. But now that Paimon thinks about it, there's something that's just not right about this guy. Why would another want people to pay him? Huh. That's a good point. None of the other Adepti we've met seemed like they needed anything from anyone. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. So, are you buying or not? Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that desk over there. देखते क्या है इसके अंदर। So, are you buying or not? किधर है याक्षा वाली बुक? किधर है याक्षा? याक्षा, वेर इज याक्षा? So, are you buying or not? किधर है यार ये याक्षा वाली बुक? किधर है मुझे पता नहीं चल रही। किसी को पता है याक्षा वाली बुक किधर है? दिल्ली में कब से? शुरू से तो कहीं मिलके ही टिप्स लूँगा। मैं भी दिल्ली वाला हूँ। अरे भाई दिल्ली वाले भैया, दिल्ली वाले भैया।
डले वाले भैया कहाँ है ये याक्षा वाली बुक? एक मिनट, यहाँ पे कुछ था, इससे पूछो क्या कहाँ है? इससे खरीदनी है क्या हमें बुक? याक्षा लेजेंडरी शैटर्ड एल्बर, लेजेंडरी लोन स्वॉर्ड, ये बुक्स खरीद सकता हूँ मैं? किधर है यार? मैंने पता नहीं क्यों खरीदा है ना, मेरा मन किया। किधर है यार ये बुक? सही रही, मिल गई। This is the one. Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world. गेम सुपर लैगी, गेम बहुत ज़्यादा लैग हो गई थी। दिल्ली से हैं हम, दिल्ली। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। हाय अगेन अंशिका 2। गेम लैग हो गई स्टोरी टाइम पे, सही टाइम पे। वैसे स्टोरी टाइम हो रहा है, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, जिनशी इम्पैक्ट स्टोरी टाइम। लेट्स सी क्या यार, स्टार्टिंग से ही दिखानी चाहिए वरना गुस्सा आ जाएगा, बहुत गलत बात हो जाएगी हमारे साथ। हैप्पी अभी भी स्ट्रीम पे है, पर मुझे लग नहीं रहा था हैप्पी स्ट्रीम पे है, क्योंकि 1 की वॉचिंग है। जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा। देखते हैं क्या होता है। हो जाए यार, स्टोरी दिखा दे, स्टोरी देखनी है। स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, याक्षा, याक्षा वाली स्टोरी। माइका This is the one. Let's see what it's all about. In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3. While the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights,
In the glow from Gyaan, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. This book is about the Yakshas, a group of adepti who defend Liye. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? So, there used to be 5 main Yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second! Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all their years of protecting Liye, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. मैं बढ़िया, तुम बताओ मयंक, ये क्या जीरो की वॉचिंग? कोई नहीं भाई, क्या दिक्कत आ रही है? जीरो की वॉचिंग है, क्या कर सकते हैं? Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. मैं ठीक, नाइस। और मयंक, स्ट्रीम को जो है, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रीम को जो है 2-3 मिनट पीछे करके देखो। एक कट सीन आया है तुरंत, अभी कट सीन आया है गेम का, तो शायद तुम्हें अच्छा लगे। ट्राई करो, देखो। So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what now to head back to where this all started and commence our investigation? Let's part the fog of mystery that hangs over Gyaan Karst and let the truth shine through in its full glory! To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! ओ तेरी क्रीचर और व्हाट, नाइस। चलो अच्छी बात है, तुम्हें थोड़ा सही लगा, अच्छा लगा। इसके कट सीन ओपी होते, मज़ेदार होते, मज़ा आता देखने में मुझे भी। वेट, फिर से वही हिली चल रहा है। स्टार स्नैचर। Flee at my command, foul demons! Flee! Why won't you flee? Uh-oh, looks like Star Snatcher's in trouble.
And there are innocent bystanders here too! We have to step in! चलो मारे उन्हें. Thunderclap! There is no escape! No, my sword! हरा दिया. Oh, I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? Now why does that sound familiar? Right! It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain traces of their power! No wonder he was able to scare those monsters away earlier! What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? Yep. One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Correct. Come on, Traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. Rain outlines your fate. Shine down! गया ये. हमें ये चेस्ट चाहिए, हमें ये चेस्ट चाहिए, हमें ये चेस्ट चाहिए. कैसे लाएं ये? हमारे पास कुछ है. फायर पावर. It is our fire power. Deploy, cross. बुझा दी आँख. I hope we find long-lost ancient literature. एक मिनट, मुझे प्रीमोजेंस नहीं मिले. पता है कि दैट मुझे मेन तो प्रीमोज चाहिए यार. प्रीमोज नहीं दे रहे गंदे लोग. Let's find. ओए शाओ. शाओ मिल गया मैं. Oh, it's that conqueror of demons again. No wonder. Paimo was just wondering who could have made such short work of these hilly churls. Let's see what a real Adeptus has to say about all this. Let's talk. It's you. I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Nope. Huh? He isn't usually this polite. Let's go, but you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Does that mean... Yeah! Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? Yep. So that means... Oh... Poor Xiao!
I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. Yep. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. मैं तो यहाँ ही हूँ, आप बताओ मयंक, तुम यहाँ नहीं थे, कितने दिन बाकी हैं आयाका के लिए? Hello to brother gaming, welcome to the bro. How hack primos? I don't know. I don't wanna hack it. I only earn it. I only want to earn it. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, I'm sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a big help! Paimon promises! No need. I am used to fighting alone. Okay. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh! Consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now! Please? Well, Come on then. चलो, ये finally मान गया. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. But in recent years, other living things have suffered, when the burden should be mine alone to bear. I must reflect on this. Okay. नहीं देखनी मयंक, अभी मेरे पास टाइम नहीं है मयंक, अभी कोई भी मूवी देखने का, मेरे एग्जाम टाइम चल रहे हैं अभी. पता नहीं, मैं तो यहाँ यूँ पता अभी देखता हूँ. शाओ अगर रियल लाइफ में मिला तो मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा और उसे हैप्पी रखूंगा. नाइस, अच्छी बात. देखते आयाका के लिए टाइम बचे 2 दिन 1 घंटा. 2 दिन 1 घंटा कब से कब तक है? पूरा मई चलेंगे, पूरे मई एग्ज़ाम्स चलेंगे मेरे. अरे हो जा. अच्छा, डोमेन में जाना है हमें. लेट अस गो फॉर द डोमेन. ओके, देखते क्या होता है. हमें शाओ एज अ प्लेबल कैरेक्टर मिलेगा. This place gives Paimon goosebumps. Oh my gosh. I will use the ritual known as the Bane of all Evil to relieve this place of its karma. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Okay. ये म्यूजिक भी अच्छा है. As a result of build-up of divine karma in the area, Xiao will have bane of all evil permanently activated and will constantly lose HP. Additionally, the effects of that divine karma will allow Xiao to regenerate HP when he deal damage to opponents. Okay. बड़े यहाँ पे चेस्ट है. ये और मजा आ रहा है शाओ खेलने में. यार बहुत मस्त है ये तो. गया. Worthless. 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 Worthless.
Worthless! यार ये तो बड़ा मजेदार है। एक मिनट रुको यार, मुझे शाओ का बिल्ड भी देखना है। मैं बिल्ड देखना भूल गया शाओ का, टाइम ना चल रहा बस। प्राइमोडियल जेड विंग स्पेयर, ओके, क्रेडिट बढ़ाता है इसका। और आर्टिफैक्ट में इसने नोबलेस ले रखे 4 सेट पर पीस। कॉन्स्टिलेशन कितना है इसका? 3 पे है। टैलेंट देखो लेवल 8 पे मैक्स है। एक डिटेलिंग, ओ भाई गड़बड़ है, गड़बड़ है। बहुत लैग। Pain of all evil. That must be the power you got for being a vigilant yaksha, right? Yep. Paimons just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher? I am aware of no Adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Worthless. 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 Useless. जाना कैसे हो उधर? मजा आ रहा है यार शाओ को यूज करके। हेल्थ जा रही है, शाओ भागो। आ गया, आ गया। Worthless. जल्दी। Incoming. Worthless. वही बहुत सही है ये तो। अरे नहीं, वैसी हेल्थ कम हो रही है हमारी। Worthless. अरे मैं क्या दबा रहा हूँ ये? जल्दी मार ना जाएगा। बस बच गए। It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Hello Anchika, welcome back to the stream. Hello Cloud, welcome. I will sub to your channel too. Thanks bro. Welcome to the stream by the way. Sorry मैं chat नहीं देख पा रहा था क्योंकि ये डोमेन में फाइट चल रही थी ना, उसकी हेल्थ कम हो रही थी। Now, this Star Snatcher you speak of. What is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies.
As an Adeptus, do you have the power to grant wishes, Xiao? The Liyue of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait. Truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us! क्या हुआ? अच्छे से बोलो अंकित, तो अंशिका वेलकम टू द स्ट्रीम. अंशिका वेलकम टू द स्ट्रीम. लो बोल दिया. नो डोंट से दैट. आई विल बी लिटिल एंग्री. बोल दिया. सिचुएशन खराब होती जा रही, तुमने बस स्टोरी देखो. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again. करेक्ट. नहीं, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो. मेरी प्यारी अंशिका, वेलकम टू द स्ट्रीम. कुछ? No. I only slay demons. I do not kill mortals. तो सही कहा. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul. अब ठीक हो गया. नाइस. हाँ अब हुआ. चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक हो गया. जल्दी से स्टोरी ख़त्म करते हैं, स्ट्रीम एंड करते हैं. और लंबी चलेगी स्ट्रीम. और जो स्ट्रीम पे लाइक करना मत भूलना. डॉक्टर ये क्या अनिकेत, रियलमी है आपका भी? नहीं, रियलमी नहीं है मेरा, ओप्पो है. ओप्पो 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 की 3. गेम तो सही चल रही थी यार. मेरा ओप्पो K3 है. अच्छा, तुम्हारा भी ओप्पो K3 है? मेरा भी ओप्पो K3 है. ओके, एक्चुअली आपके पास भी सेम ऑप्शन है. अच्छे अच्छे ओके. ओपी 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 ओपी. सेम पिच, सेम पिंच. हो जाए यार, इसकी लोडिंग हमेशा टाइम लेती. लोडिंग लेट मी कंटिन्यू अवर टॉक्स. और बताओ यार, तुम लोग कुछ सुनाओ यार, कहानी सुनाओ अपनी, कुछ तो सुनाओ. अरे यार, फिर से बाइक लेनी पड़ेगी. चलो कोई नहीं, ले लेते हैं. क्या दिक्कत आ रही है? लेट्स गो.
लेट्स गो, दोबारा फाइट लेनी पड़ेगी, फिर से थ्रो करना पड़ेगा हमें, तो हमारा माइक ऑफ रहेगा थोड़ा सा। Ooh, this place gives Paimon goosebumps. I will use the ritual known as the Bane of All. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Worthless! 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 Here! Bane of all evil. That must be the power you got for being a vigilant yaksha, right? Paimon's just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time, too. Star Snatcher? I am aware of no Adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Worthless! Useless! Boring! Worthless! Here! Here! Worthless! Worthless! Useless! Here! Useless!
Worthless! Boring! It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an Adeptus, do you have the power to grant wishes, Xiao? The liye of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liye To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait. Truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. हाँ हाँ क्या हो गया तुम माइक ऑन क्यों करा रहे हो स्टोरी चल रही है ना इसलिए मैंने माइक ऑफ कर रखा है If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again. No. I only slay demons. I do not kill mortals. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liye if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A censer, 7 lamps, and something to reduce the temperature. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the censer and the 7 lamps... probably not the kinds of things you're gonna just stumble across in the wild. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianheng? The ancestors of the people of Liye built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. चलो बाय जाना है अब मुझे जाना पड़ेगा ओके बाय थैंक्स फॉर जॉइनिंग यार ये गलत बात है लग्जूरियस जेट से हमें इतने कम प्रीमियम मिल रहे हैं बहुत गलत बात है तो हम किसी की आत्मा को उसकी बॉडी से निकालने का आर्ट सीखने वाले हैं जो कि हमें आगे शायद फ्यूचर में काम आ जाए
The spirit soars the mountains high, while the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but... Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest. For the dream trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the adepti arts. Wow. Hyman's never heard of that happening before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. This sensor should be fine, right? At least it isn't as run down as the shrine. So next, we just need to grab the 7 star lamps, right? The sooner we start, the sooner we'll be done. मुझको जाना पड़ेगा 5 हो गए और भी ढूंढने हैं अभी 5 के साथ 2 और चाहिए ना वो रहा एक और Hyman thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? Huh? Where'd he go? He was right here. I presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. Ah! It's that guy's voice. Hello? Where are you? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the adepti art known as mortal lingering. Now that you have taken the 7-star lamps and censer used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible to you. I was once a junior in the Order of the Yakshas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Oh. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern liye, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Liye, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear,
Death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases. I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. The mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the conqueror of demons. If only I could taste some authentic grilled ticker fish once more. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going. But let's come back here and make an offering sometime. Teleportation completed. बड़ा श्या मिल गया श्या Have you gathered the items for the ritual? This sensor and these lamps. Their designs are flawless, almost as if they were made specifically for use in the Adepti arts. Where did you come by them? Oh, and, he says hi! Pervases. Yes. This does have the hallmarks of something Pervases might do. As I thought, it seems that he could not leave Liye behind, either. I hope that its present state will allow him to rest in peace. Well then, let us begin preparing for the ritual. Place the censer in the middle, and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. करते भाई जो बोल रहा है पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये रिचुअल Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. That seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Stop talking! I'm sorry! When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts, and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin! Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other questions, let us begin. Let us do it. Time for the ritual.
Then we meditate. Ugh. Paimon really doesn't want to think about that fraud. Bring forth sin! It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire one arrow each at the glowing parts, right? At the ready. एम्बर आ जाओ। अब देखते क्या करना है। We finished the ritual, and we followed all the instructions to the letter. पाइमन ने नहीं किया, पर देवायाक्षा नहीं बोला था इसने। Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Okay. Where is one? Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. An adepti art? You dare don the guise of an adeptus in one's presence. भूत, yes आया कार्बन भूत। हम नहीं बुलाया इस भूत को। But as for the matter of one's present location, one could have sworn that one was dozing off to sleep at Wangshu Inn not a moment ago. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? अच्छा। All right, time to take him down a peg. मारते हैं। There is no escape. Such impertinence. Where are one's followers when one needs them? कहाँ छुप के बेटा? You shall perish. भाग रहा है ये। Hey, stop it! Stop it! Ow! निपट गया। Please stop! I surrender! I surrender! No! No, never again. You almost killed me. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, Great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery. Masquerade as an adeptus. Exorcise demons without exterminating them. And display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Xiao's got him scared stiff. वो भी डरा रहा है। Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I am an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. Huh. So to sum you up, you're Xiao's biggest fan? Yes.
Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That wasn't quite our intention. Please allow me to swear this oath before the great conqueror of demons. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. Now go. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Liye. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshuin first thing tomorrow and look for him. Okay. शाओ से तो हमने कोई बात ही नहीं की। लॉल भाई ये कितना एम्बैरेसिंग होगा शाओ के लिए सच में यार बहुत। आज शाओ का बर्थडे है सच में। आज शाओ का बर्थडे है क्या सच में? ए शाओ भाई और शाओ का बर्थडे है और मैंने आज शाओ की स्टोरी विश कर दी। नाइस गिफ्ट बड़ा गिफ्ट। शाओ सच में बढ़िया है यार। शाओ चाहिए मुझे भी। शाओ ने मन बनवा दिया मेरा कि मुझे भी शाओ चाहिए। वांगशुइन में जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना लेकिन इससे मिलना है ना हमें। ना Hey there, boss. Star Snatcher's staying here, right? Star Snatcher. You mean the false Adeptus who wore a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Paimon. Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it! Paimon's curious! Huh? Seems like he actually left us a few nice trinkets. हमें नहीं पढ़ना इतना बड़ा। Along with... Woohoo! The sigil of permission! Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. Yeah. Anyway, let's go take the sigil of permission to Xiao, shall we? Yep. शाओ से मिलना पड़ेगा। यहीं पे शाओ। शाओ विरारी शाओ। अरे ऊपर है वो रहा। द इलेक्ट्रो ट्रैवलर। अरे 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 नीचे टपक गए हम। पर गिरे कैसे? ओपन स्पेस था क्या? टपक गए हम पता नहीं। अरे अब ये नीचे दिखा रहा है शाओ को। पीछे क्यों मिला था? मुझे याद है शाओ पहले। यहाँ पे नीचे है शाओ। ये रहा यहाँ बैठा है। वाह We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? 1 grilled ticker fish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu this time? Well, that's not like Xiao. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. Huh. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Was there anything else? I
am accustomed to eating alone. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Nice and spicy. तो हो गई शाओ की स्टोरी को कंप्लीट कर दी हमने. हमारा को ऑफ भी ऑफ हो गया था, वो भी ऑन हो गया. शाओ की स्टोरी को इसकी वजह से ऑफ हुआ था. तो गाइस वांगशू इन पे हम एंड करते हैं अपनी आज की स्ट्रीम. टाटा बाय बाय गुड बाय. तुमसे मिलते बाद में. थैंक फॉर जॉइनिंग.